going viral is the worst thing that can happen to someone, to be very honest. Because once you go viral, then you have no clue why you went viral. सबसे पहले तो you don't know how do you handle this new audience, because you're in a dilemma then कि क्या मैं ये दोबारा करूं जिससे और लोग आए, या मैं इन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं उस चीज में जो मैं बनाना चाहता हूं. What do I do? So it's so overwhelming that people lose track of what they want to do, which is why it is much better to grow slowly than grow fast. बिकॉज जितनी जल्दी चीज ऊपर जाएगी उतनी जल्दी नीचे भी आती है ना. तो इट्स बेटर तो आप धीरे 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 तो बढ़ो, ताकि आपको धीरे धीरे नीचे आने वाला भी उतना ही स्लो हो. Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. In this episode, you are going to see my conversation with Vedant Rusty. Vedant is a YouTuber and मेरे को इनका content बहुत ही ज़्यादा fascinating लगता है because of the way he edits, because of how precise his videos are. वेदांत के साथ I talked about a lot of things. एक प्रॉपर हमने एक आइस ब्रेकिंग सेशन किया था विच वी नेवर रिकॉर्डेड, बट इट लेड टू लाइक अ वेरी स्मूथ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग यूट्यूब, रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस. बहुत सारी अलग अलग रिकमेंडेशंस दी वेदांत ने. आई हैड ए लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू हिम. मुझे लगता है आपको भी एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. सो लेट्स जंप राइट इनसाइड द कन्वर्सेशन आई हैड विद वेदांत रस्टी. Hi Vedant, how are you? Welcome to Chalchitra Talks. Oh, this is how you begin. Yeah. That's very nice. So how I begin is that I just ऐसे मैं कैमरा लगाता हूँ अपने whenever I'm shooting offline, press record on one camera, press record on another camera, I sit down and that is how we begin. So this is nice. I'm doing very well. I'm just having my coffee, बहुत ही ठंडी coffee, इसमें बहुत सारी बर्फ है. I'm also having coffee. Very nice. Oh, तुमने अपना branded mug भी बनवा रखा है. Oh So yes. I thought of getting these done. Then I realized this mug of mine has become so associated with when I'm sitting. मेरे हाथ में ये mug होता है. So I'm thinking I'll get these somewhere कहीं से, and I'll have those as my branded mugs. It would be perfect if this becomes Rusty somehow. So that would go really well with the brand. But nice. so that is what is up. हमारा भी ऐसा ही कुछ प्लान था कि यार डिफरेंट सा मग बनवाते. दैट इज व्हाई लाइक एक तो ब्लैक तो मेरे को स्टार्ट डे वन से था कि ब्लैक रखना है, और वो थोड़े ना बड़े से वो हैरी पॉटर स्टाइल मग्स चाहिए मेरे को, जो बियर मग्स टाइप होते हैं ना. हाँ, बट यस, सो नाइस टू कनेक्ट विद यू मैन. लाइक मैं आज ही सुबह आपके कुछ वीडियोस देख रहा था एंड मैंने आपका पुराना कंटेंट इतना नहीं देखा है. मेरे को पता है, आई नो यू आर इन द डोमेन, यू मेक गुड कंटेंट, बट आज मैंने आपके वो गॉड कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखे. मेरे को बहुत, एक तो एडिटिंग बहुत पसंद आई मेरे को. आई जस्ट लव्ड लाइक द वे यू डिड दोज. सो और मेरे को ड्रॉप पॉइंट्स ऐसे लगे नहीं कि मैं यहाँ पे ड्रॉप होऊंगा या नहीं होऊंगा. तो इट वाज वेरी नाइस डूड. सो डू यू स्क्रिप्ट द होल थिंग बिफोर रिकॉर्डिंग दिस? आई डोंट कंसिडर एवर, व्हिच आई शुड. आई नो कि वीडियो में कहीं ड्रॉप पॉइंट तो नहीं है, कहीं बोरिंग तो नहीं हो रहा है. So usually, so the two episodes that you happen to see surprisingly were the ones which were unscripted. तो एक हल्का सा आउटलाइन होता है बुलेट पॉइंट्स का कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है. कैमरा ऑन होता है, यहीं रख के कैमरा ऑन होता है. आई रिकॉर्ड फॉर 30-35-40 मिनट्स, जितना भी लंबा चलता है. देन यू ट्रिम इट डाउन टू अ वेरी कोहेरेंट 20 मिनट 18 मिनट काइंड ऑफ अ वीडियो, एंड यूजुअली दैट डज वेल. So it's more about how you represent that information which is in my head while I'm recording. तो वो कैसे ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे when I'm editing it, that is I think where the game is. But otherwise one script. But I do script a lot of my other videos these days. And do you edit these yourself? So on the main channel I edit everything myself. Oh. Yeah, because I want, so editing also, the way you edit, the way anyone edits, is also a representation of their own individual style, preferences, personality. What music you are using, what transitions you are using, what font you are using, how you are communicating, what cuts you are using, वो सब एक individual personality का होता है. हर editor का वो अलग होता है. So on my main channel, which is Vedant Rusty, मेरे नाम के अंदर ही है, तो I would want my personality to be there. So for the other channels, which are, for example, the podcast channel, I don't edit it myself anymore. For the channel that I had, which was around productivity, I did not edit those videos. For the gaming channel that I did, उनको मैं खुद edit नहीं करता था. So Vedant Rusty के लिए I edited myself, and that is just because I want my personality to shine through even in the editing. मैं आजकल ना मिस्टर बीस्ट के बहुत पॉडकास्ट देख रहा हूँ, एंड इफ यू हैवंट सीन कॉलिन एंड समीर के साथ उनका लाइक दो घंटे का वो बोलता है, जो ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे गेम खेलते हैं ना कि यार ये मतलब वो जैसे आपने जो चीज़ बोली ना, बहुत लोगों का होता है कि टिल दे टेक द स्टेप कि यार किसी को ये चीज़ पूरी की पूरी अपन दे देते हैं, नहीं तो उनको ये लगता है कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी इन द फाइनल वीडियो. बट
मान लीजिए you can still do it where you approve the things as a director. Let's say you become the director there कि यार ऐसा म्यूजिक होगा, ये ट्रांजिशन ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, because eventually outputs can come like that ना. what So I'll directors tell you हाँ why. हाँ So I've considered those things and I've tried those things. The problem with that is that the editors that I get to work with, which are mostly on a freelance basis, do not end up working just for one or two people. They end up working with 5 people, 6 people, 7 people, 8 people. And there are two problems there. One is that वो prioritize नहीं कर पाएंगे आपका काम, obviously. Because they have 8 different projects, they're going to try and complete 8 in the best or shortest amount of time. Two, they will never be incentivized to put in enough time and effort to associate themselves with my style, my understanding. So I'll have to anyway spend up more time directing them, where you would want to invest that time where it compounds over time and the returns keep coming in. So till the time I cannot, let's say, afford to hire a full-time editor which will sit right in my house or will work just for me, tab tak I'm of the opinion I should edit myself. And I want to hire an editor which is good enough. I want to pay him good money or her good money so that they're not incentivized कि चलो और 5-6 प्रोडक्ट उठा लेता है, उसके बाद वो उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है. But the priority list में सबसे ऊपर वाला काम should be my work because they would be. So that is the opinion. So I'm hoping in the next few months we'll reach that stage जहाँ पे I can be like कि ठीक है तो को मेरे साथ काम करना है, and then probably I'll then ask them to edit everything उसके बाद तो. मेरे को ये बताइए कि व्हाट्स योर कंटेंट कंजम्पशन लाइक तो मैं उस हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू यूजुअली कंज्यूम इन रिगार्ड टू मूवीज, बुक्स, पॉडकास्ट, एनीथिंग. So it has changed a lot over the last few years. So these days, my primary content consumption is either sitting in front of my ऐसे computer के सामने यहीं पे. There are 2 screens in front of me. One is here, one is here. तो एक पे सारा काम चल रहा होता है, कभी कभी लैपटॉप होता है नीचे, उस पर काम चल रहा होता है, बैकग्राउंड में ऐसे रैंडम यूट्यूब वीडियोस चल रहे होते हैं. दैट इज वन. टू, आई वुड वॉच टीवी शोज और मूवीज. उसके लिए आई वुड कंज्यूम देम जब मैं बाहर अपने काउच पे बैठा होता हूँ एंड व्हेन आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी शोज एंड मूवीज. एंड थर्ड, what I consume is I read before going to bed. ऐसे काम वाम बंद करके मुंह हाथ धो के आराम से बेड में जाके किंडल उठाओ, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक पढ़ो. सो दैट इज व्हाट आई कंज्यूम. हाँ, यही है कंजम्पशन पैटर्न, यही है. व्हाट आई कंज्यूम वेरीज अ लॉट. अभी कल मैंने आरआरआर देखी, उससे 3 दिन पहले मैंने वो देखी द नॉर्थमैन, उससे फ्राइडे को मैंने वो देखा था बॉयज, उससे पहले मैंने टॉप गन 2 बार देख के आ गया मैं हॉल जाके. फिर मैंने पृथ्वीराज देखी, अरे बहुत ही बढ़िया पिक्चर लगी मेरे को. फिर मैंने बीच में भूल भुलैया देखी थी. फिर मैंने शो उठा लिया था एक पुराना सा साइनफील्ड, दोबारा देखने लगा मैं, कभी बैकग्राउंड में ऑफिस चलता रहता है. सो इट्स ऑल ओवर द प्लेस. देयर इज नथिंग इन पर्टिकुलर दैट आई लेट्स से एंजॉय एज अ व्यूअर कि यही देखना है, इसी टाइप की चीज़ें देखनी है. सो इट्स ऑल ओवर द प्लेस. एंड पॉडकास्ट कैसे सुनते हैं, अगर आप सुनते हैं तो लाइक आर दे द यूट्यूब ऑडियोज रनिंग इन बैकग्राउंड और आर देयर एनी पर्टिकुलर podcast that you listen to? So I don't listen to podcasts anymore unless there is a very specific Joe Rogan episode that comes around. For example, अभी जब उनका Lex Friedman वाला आया था वो देखा था मैंने, last podcast that I remember. What I do listen to in the background are YouTube videos which are around a particular topic and they are an hour and a half, 40 minutes long. So there's this YouTube channel called Healthy Gamer GG. He's a psychiatrist who works with gaming teams. And he makes really good content around psychology and psychiatry and addiction and how our brain works and the human psychology वगैरह वगैरह. तो वो चला लेता हूँ मैं बैकग्राउंड में. There's a very long 30-35 minutes videos. But beyond that, I don't think I'm consuming podcasts as much. इसके बारे में थोड़ा और बताओ. ये साइकियाट्रिस्ट है फॉर गेमर्स. So his full-time job is working with esports teams and counseling them and taking care of their mental health. He streams on his Twitch, records 3-4 hour live streams and then clips them and puts them on YouTube. And is these the streams of him playing games only? No, he's just talking. So he goes on Reddit. He would go on Reddit and take a problem that people have sent him on a subreddit and he would talk about it from a psychological or a psychiatry perspective. काफी इंटरेस्टिंग होता है. पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड होते हैं वीडियोस जैसे. Yes, they are mostly problem solving videos from a very scientific perspective. Very nice. Sometimes he would call in guests and he would have live streams with them. A very interesting channel. Very interesting. अभी इंडिया में कौन से क्रिएटर्स है जो आपको एक्साइटिंग लगते हैं और यूट्यूबर्स या? I'll be very honest. I don't consume YouTube as a creator perspective से ज़्यादा नहीं देखता हूँ मैं. It has reduced a lot. So I started off my YouTube channel by reviewing movies and TV shows. ठीक है.
Yeah, so my first 200 300 videos are all इस movie का review, इस show का review, इस movie का review, इस show का review. And it came to a point where I used to go watch a movie at 9 a.m. on the day that it releases. I used to take off from office कि मैं लेट आऊँगा. सुबह जाके 9 बजे पिक्चर देखी, 12 बजे घर आए, पिक्चर देख के वीडियो बनाई, 2 बजे तक वीडियो पब्लिश करी ताकि पहले पब्लिश होगी, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे. एंड वंस डे आई जस्ट फिगर्ड, मतलब ऐसे इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि आई एम नॉट वॉचिंग मूवीज टू वॉच देम, आई एम वॉचिंग देम टू मेक वीडियोज ऑन देम. So then I stopped consuming movies and TV shows उसके बाद for a while. Similar thing happened with YouTube creators because I was watching and making content on YouTube creators and creators in general and the community, the internet space in general. And I got tired of it also कि बहुत हो गया, अब नहीं कंज्यूम करना, तो बाद में देखेंगे. सब यूट्यूब पे अगर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आती है जिसका थंबनेल वगैरह इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो चला लेता हूँ मैं. इंडिया में हु डू आई वॉच जुडिशियसली? प्रॉब्ली तन्मय, बिकॉज उसकी वीडियोज आर गुड, दे आर वेरी शॉर्ट, 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होता है. you're having dinner, you're having lunch, उसमें चला के बैठ जाओ. और who else do I watch? I can't pick any names off the top of my head because उसको याद नहीं रहा है ध्यान में. यार एक चीज बताओ, बड़ा एक ऐसे पर्सनल सी चीज है कि जो आप कह रहे हो ना, सो मेरे ये जो दो वर्टिकल्स हैं लाइफ में, जो मेरी जहाँ पे पर्सनालिटी आती है, वो मेरी एक फिल्म मेकिंग साइड है और एक यूट्यूबिंग साइड है. फिल्म मेकिंग में आई वॉज इन बॉम्बे फॉर 5 years. आई हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंस फॉर a lot of filmmakers and what happens, like how they make films. बट मेरे को ये क्लैरिटी आ गई थी 2019 के अराउंड कि मेरे को किसी के जैसा नहीं बनना. ऐसा होता है ना कि मेरे को इसके जैसी पिक्चरें जैसे बनानी बनना है, yeah. हो गया था मेरा कि नहीं. अब मैं यूट्यूब गेम में थोड़ा जा रहा हूँ, अब हमारा भी चैनल थोड़ा लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं पहले से ज़्यादा. तो मेरे को ना बड़े यूट्यूबर्स जैसे देखने को मिलते हैं, ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे. एंड मेरे को बाहर दो ऐसे लगते हैं कि जिनका मैं अच्छा मिक्स बन सकता हूँ, लेक्स फ्रीडमैन प्लस कॉलिन एंड सामिर. बट मेरा हो गया यार कि आई वो थिंक नहीं बनना अब. सैचुरेशन ओवरऑल आ गया कि हे, इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज, बट आई एम लाइक कि हे यार ऐसे तो गेम नहीं खेलेंगे. हाँ, so exactly, so that is my philosophy as well when I'm playing the YouTube game. So I only talk about things that I now want to talk about. It can be anything. हाँ, It can be anything. It can be from कि इंडिया में jobs क्यों नहीं मिल रहे हैं, my opinion on it, whether of regardless whether anyone wants to listen to it or not. But there are people who want to. So it is more, so again, that's the discussion that we were having before we recorded. Because it is an individual personality based content channel that I do. So it has to come back to what do I like, what do I not like, how am I evolving. So that really takes that pressure off कि तुम्हें इसी डायरेक्शन में कंटेंट बनाना वरना ग्रोथ नहीं मिलेगी. So I mean, it might sound थोड़ा ऐसे counterintuitive, but I have probably stopped considering numbers as a metric anymore. At least internally. I know they are important for brands and recognition वगैरह वगैरह, but internally I've stopped considering YouTube numbers as a metric for how good I'm doing in the content space. Before the pandemic started, I was producing 20-25 videos a month almost. These are proper 10 minutes, 12 minutes long videos. So I did that across Jan, Feb, March, April, May, June of 2020 and got 200,000 subscribers in August of 2020. तब वो wave चल रहा था बढ़िया. But then the pandemic happened and I was there in London for 6 months अकेले. So that burnout eventually caught up with me, and since the last 1.5, 2 years at this point, I'm still trying to recover from it. So very interesting thing that people don't talk about, which I learned fairly recently. लोगों को लगता है कि बर्नआउट ऐसे वेकेशन लेके या थोड़ा पावर थ्रू करके 2-3 महीने में ठीक हो जाता है. बट टिपिकली बर्नआउट्स एंड अप लास्टिंग एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5 years. Fuck, dude. So it will take you, if you're burnt out, it will take you 2 to 5 years to recover from that burnout. तो मैं And वो whatever we अपने are आप, seeing of you also, it's still in the phase of recovering of burnout. yes, whatever you're saying, whatever content you're saying, whatever conversations you're saying, it is in that phase of recovering from that burnout. So the entirety of the last year, all of 2021, I probably enjoyed making 3 or 4 videos out of those. The entirety of the year. The conversations, of course, the podcast conversation I did, loved them. But under my individual name, probably 3 or 4 videos I enjoyed making. But you have to continue playing the game. वानी जो मेरी को-फाउंडर है ना, उन्होंने मेरे को हाँ. 3-4 महीने पहले एक वीडियो भेजा था कॉलिन एंड समीर का. आपने उनके आई थिंक देखे हैं वीडियोस, राइट? कॉलिन Yeah, एंड समीर. I've seen that stuff. सो दे मेड अ वीडियो. आई थिंक एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, Emma Chamberlain. MLM Chamberlain. Yeah, I've seen that video. Why Emma Chamberlain quit, right?
तो मैंने जब देखा नहीं, मेरे को लगा यार इसका तो मैंने वानी को बोला ये क्यों भेज रहे हो, मेरे को अभी नेगेटिव वीडियोस नहीं देखने, आई डोंट वांट टू वॉच वीडियोस जहाँ पे आई एम गेटिंग कि लोग यूट्यूब क्यों छोड़ रहे हैं, मेरे को तो ये गेम खेलना है। बट Yeah. क्या हुआ, 1 महीने पहले मेरा मन हुआ वो वीडियो देखने का, एंड आई Hmm. वॉच्ड इट एंड इट गेव मी एन एपिफनी लाइक नेवर बिफोर। पहले तो मैंने वानी को वॉइस नोट भेजा, ब्रो सॉरी, मतलब मैंने तो मिसजज कर लिया वीडियो, बट यहाँ तो Yeah. उन्होंने सोल्यूशंस की बात की है। There is a line in that video. Burnout is creative output which doesn't have direction. That like really stayed with me. आप कर रहे हो but आपको पता नहीं है जाएगा कहाँ, कोई Yeah. like undirected if it's a word, like कि direction lies creative output leads to burnout. But what they talked about on the channel, जो जिसके बाद मैंने एकदम से पेस पकड़ ली, they talked कि Hmm. इसके तरीके क्या है burnout से निकलने के। They talked about seasonal content. एंड दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर माई सेल्फ राइट नाउ। यार एक वो जो वीकली वाला जो जोन है ना, यार नहीं नहीं यू हैव टू शो अप एवरी वीक, मैंने कर लिया, मैंने 3 साल किया और ऐसे किया है कि बहुत कम लोगों ने किया होगा। जब मैंने एक विदाउट अ ब्रेक आई मेड लाइक 100 एपिसोड्स फॉर 2 years, राइट? Yeah. बट उसके बाद हो गया कि ठीक है अब मेरे को वो नहीं करना, सो बट आई स्टिल वांट टू प्ले दिस गेम। सो आई फाउंड द सोल्यूशन ऑफ सीजनल कंटेंट। यार Hmm. इसलिए शोज भी वर्क करते हैं जो हम देखते हैं कि यार उससे एक तो बर्नआउट नहीं होता एंड देयर इज एक्साइटमेंट फॉर द नेक्स्ट सीजन आल्सो। सो Yeah. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द आइडिया ऑफ सीजनल कंटेंट? I don't necessarily agree with it. Like I understand the psychology behind it, understand the philosophy behind it, but you have to also consider the market that you're in. YouTube space में for Colin and Sameer और Emma Chamberlain it will work because उनके देखने वाले लोग 3 लाख वो 300 मिलियन की तो YouTube अमेरिका की जनता है. Not all of them are watching YouTube. Not all of them have time to watch YouTube. Let's assume your potential target audience is on a positive, मतलब as a good exaggeration या फिर good side पे 100 million people. ठीक है, that is not a huge audience. आप देखो अगर मिस्टर बीस के 100 million सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, so he's potentially at the cap of where that audience can be, which is why Mr. Beast is expanding to other parts of the world. So that is one example. Again, Mr. Beast is an outlier. India में there are 1.5 billion people. And India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, that audience constitutes for, I'm gonna go on the higher side, 2 billion people, let's say. Potentially 2 billion people are going to watch you. What that means is that not only are अभी उसमें से आधे भी इंटरनेट पे नहीं है, by the way. There's more than half of this population that is still to come on the internet, which means there are going to be more creators. There are going to be more people that are going to watch them. The upside to this is that everyone can have an audience. There are enough people watching and enough people creating that everyone can go out to have an audience. The downside of this is that if you're not playing the consistency game, then the chances of you not मतलब वही होता है सिंपल सा out of sight out of mind हो जाएगा because लोग इतने सारे हैं बनाने वाले. So you have to play the consistency game lest you be forgotten. Question: what's the longest you have gone without putting out a video on the channel? On the main channel, I think last December I had some family stuff going on, some family थोड़ा health scare. So I think 1.5 2 months I did not put out any videos. Psychologically, like how were you doing at that time कि वो कितना हो रहा था कि यार Not YouTube was not in my mind at that point. Like it's a very थोड़ा serious thing था. अच्छा But तो अगर उसके हम बाद उस चीज को हटा दें, उसके उस चीज को अलावा हटा दें, कभी then ऐसे probably 15 days. दैट्स इट? ओह नाइस डू। हर 15 days 15 and दिन that में also. आपका वीडियो आया है, मतलब लाइक वैसे आज So तक? my eventual ideal goal is to put out 6 videos a month on my main YouTube channel. 6 videos a month is the ideal frequency where I can ensure quality and quantity. So I think it's a longer conversation about how do you figure out what your ideal frequency is, where you don't get burnt out, where you're still putting out the better quality stuff. So 4 to 6 is that sweet spot that I figured out for myself. But for some people it is 8, for some people it is daily, for some people it is once a month. So that is that. Podcast मैं हर हफ्ते का एक करता हूँ because मैं podcast का स्ट्रेस नहीं लेता हूँ. सही बात है। पॉडकास्ट का मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ. कॉन्वर्जेशन हो गया अच्छा तो डाल देंगे, नहीं हुआ तो अगले हफ्ते डाल देंगे. देखने वाले 5 10 15 20 50 हजार जितने भी लोग हैं, अच्छी बात होगी तो वैसे भी आके देख लेंगे, आज नहीं आज से 1 साल बाद आके देख लेंगे. तो पॉडकास्ट का स्ट्रेस नहीं लेता हूँ मैं. तो वही है अभी मेरा को लाइक व्हाट आई कैन फील होपफुली टच वुड इज दैट आई एम इन दैट स्टिल इन दैट टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ दैट बर्नआउट रिकवरी वाला जोन. तो वो फीलिंग है. What are you actively doing to get out of the burnout? Nothing in particular. So you can't. So what I have realized and what I learned from that research was
that you can't force yourself out of a burnout. You can force yourself into a burnout, but you can't force yourself out of it. So you have to try out new things. You have to try out different experiences, expand your horizons, and eventually you will recover out of it. You can't also be like complacency se baith jao. So what I'm trying to do is that I'm trying out new things in life. Like I've started attending music gigs. So one of the perks of living in Delhi is that there are things that are happening around you all the time. तो मैं कॉमेडी गिग्स जाना शुरू कर दिया है, म्यूजिक गिग्स अटेंड करना शुरू कर दिया है. आई स्टार्टेड गोइंग आउट एंड ट्राइंग न्यू रेस्टोरेंट्स अ लॉट मोर. Very I nice. have since the last 1.5 years been working out also very consistently. Very nice. So all of these things do end up playing a role where your life is not just limited to what you're doing, and there are other things that you're doing as well. I play a lot of video games. So Oh, वो भी है. nice. Nice. हाँ, मेरे को वो भी लगता है कि you need to have like at least ऐसी बहुत सारी चीजें which kind of sort you up कि फिर YouTube मतलब नहीं तो आप बस खोल के YouTube स्टूडियो देखते रहते हो. Like there वो हो needs चुका है ना मेरे साथ. I think that is a very age thing यार. Age or a number of years you've been doing this kind of a number thing. of years you will. नंबर ऑफ इयर्स यू बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग. बिकॉज मेरा वो फेज था जब मैं 100,000 के आसपास पहुंचने वाला था. 100 से 120,000 वाला फेज में मेरे सुबह दोपहर शाम यूट्यूब स्टूडियो खोलते होती है. रात को 100 देख के कितने सब्सक्राइबर है, सुबह देखा 300 बढ़ गया, मजा आ गया. तो दैट फेज हैज कम एंड गॉन नाउ. सो इट्स आई थिंक अ वेरी एक्सपीरियंस बेस्ड थिंग्स. यू कांट हैव दीज थिंग्स फोर्स्ड अपॉन यू. दीज हैव टू हैपन टू यू. Do you play any sports? नहीं यार. I can, like, I've played badminton, I've played cricket ऐसे school में, football, but nothing अभी ऐसे recently. I want to learn how to swim, but I'm not able to find a good pool around here, which doesn't have a lot of people. हाँ. And in general आप introvert हो, extrovert हो, ambivert मत बोलना, दोनों में से एक बताना. So I like going out, but I Hmm. don't like. I like going out. I like talking to a lot of people, but I'm not extrovert in the sense कि मैं जाके लोगों से ऐसे hi hello करूंगा और दोस्त बनाऊंगा नए. I'm very reserved in sense of what friends I have, what people I end up giving my time to. But otherwise, I don't have any problem in going out and talking to people. And Ambivert बोल दिया मैंने, but ऐसे शब्दों में नहीं बोला. नहीं, क्योंकि जब से ambivert word existence में आया ना, हर सबको वही जना लगता है. ambivert यूज करता है खुद के लिए. I'm very selective about who I spend my time with, is what I would say. True. Ambivert is basically like जब किसी से आप रेटिंग मांगते हो ना, तो एक रूल होता है ना, 7 मत बोलना यार, तो 6 बोले, 8 बोल. हाँ. So ambivert is the 7 of this. 7. Yeah. हाँ, ये Mostly. काफी सही है यार. बट लाइक जो आपकी पर्सनालिटी है, हाउ डज इट हेल्प यू इन योर पॉडकास्टिंग जर्नी? लाइक आप लोगों से बात करते हो, जैसे मैं आपसे बात कर Yeah, रहा हूँ. so since day one, I haven't thought about taking the podcast in a particular direction at all. And that has done harm also, it's done good also. Because the way I'm talking to you right now is how I talk to everyone in real life. How I talk to people when I'm sitting on my couch or on a normal Zoom call also. So I don't put in any extra effort to become a good podcaster. ऐसे मैं अपनी आवाज़ भारी करने की कोशिश नहीं करता हूँ बिना बात के. I have a normal casual conversation. Things come up during the conversation. And so if you're actively listening to someone talk, then with enough practice, you're able to pick up कि ठीक है, इस इंसान को इस चीज़ के बारे में बात करने में थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, तो उस चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं. So that way. I mean, after doing 80 odd episodes from 0 to 80, it's more of that. So conversations have now gotten longer. So that is one thing that has changed. पहले मैं 1 घंटे का टाइम स्टैम्प लगता था कि 1 घंटे बड़ा मुश्किल होता था बात करना. अब मैं 2-3 घंटे की बिठा लो मेरे को, जब तक ऐसे सामने वाला इंसान भी थक नहीं जाता कि बहुत बात हो गई है, तब तक बात करता रहता हूँ. तो वैसे सीन हो गया. So that is one thing that has evolved, but never thought of it from a perspective of कि यार पॉडकास्ट में ये सवाल पूछना है, ये बोलूंगा तो ज्यादा अटेंशन आएगा. None of that. रिसर्च करते हो पॉडकास्ट करने से पहले गेस्ट के बारे में? So most of the people that have been on the podcast are people that I've, let's say, either known previously or I've watched their stuff. So some of them are creators, some of them are, now I've started calling people from all walks of life. So there are CEOs that come up. There are people. So I'll have a author friend on my podcast very soon. He's releasing his first book. So I don't research basic कि क्या नाम है, क्या काम करा है, but इससे ज़्यादा नहीं. Because I want to have that conversation very raw. So I spoke with अभी a doctor creator on the podcast, I think last week. So I've never spoken to him, never did any research, but we ended up talking for 2.5-3 hours. So things do come out. वेरी नाइस. मतलब
सही है, मतलब मैं भी कुछ ऐसा सही करता हूँ। जैसे आप बता रहे थे ना वीडियोज़ बनाने से पहले आप बुलेट पॉइंट्स लिख लेते हो, आई काइंड ऑफ डू हाँ, द वीडियोज़ सेम के लिए थिंग। थोड़ा रिसर्च करना हाँ, पड़ता है हाँ। बिकॉज़ उसमें इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वो सही होनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो वो मतलब बट माय फिलॉसफी इज़ आल्सो दैट द बुलेट पॉइंट थिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा या हेल्प करती है। क्योंकि जो मैंने या आपके वीडियोज़ देखे हैं, आप उसमें यही बता रहे थे ना कि अनस्क्रिप्टेड थे, बट कहीं भी लगा नहीं कि वो अनस्क्रिप्टेड है। सो आई हैव रेड दिस समथिंग थ्योरी, पता नहीं किसने लिखी थी, बट किसी ने लिखी थी। सो हाउ योर थॉट्स कम आउट ऑफ योर माउथ आर एसेंशियली अ रिजल्ट ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव स्टोर्ड हियर। वेरी बेसिक, बट व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव स्टोर्ड हियर डजंट वर्क नेसेसरीली कि मैंने उस किताब में ये चीज़ पढ़ी थी तो मैं उसको ऐसे रट देता हूँ। How your brain works is the more you consume, the more your brain connects them. So if you have read one book, तो उसका एक क्लाउड बन गया। आपने दूसरी किताब पढ़ी, उसका एक क्लाउड बन गया। तीसरी किताब पढ़ी, तीसरा शो देखा, तो ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारे पैकेट्स ऑफ क्लाउड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन घूम रहे हैं। एंड हाउ आइडियाज एंड वर्ड्स कम आउट इज व्हेन योर ब्रेन कनेक्ट्स देम इन मल्टीपल पैटर्न्स. So that is the philosophy that I, let's say, consume with, or philosophy तो नहीं, but that is how it works. I've learned or read how this works is ये कि it becomes then easier for you to talk about any topic where, because your brain is instantly capable of making those connections and coming up with unique permutation and combinations of ideas and thoughts. ये बहुत सही वे ऑफ कंजम्पशन है, बिकॉज़ मेरे को याद है एक जावेद अख्तर का मैं So इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, डोंट रीड बुक्स सो दैट आप किसी पार्टी में जाके उसकी yeah, रेफरेंस दे सको कि यू लुक कूल कि so हाँ it's यार। so it's not a very conscious way of consumption. It's just that you are हाँ, consuming. बिकॉज आप अगर हाँ, कॉन्शियसली कंज्यूम करने जाओगे ना कि मेरे को पढ़नी है ये किताब नॉन फिक्शन की बिकॉज मैंने उसको वेदांत और वैभव के पॉडकास्ट में सुना था ताकि मैं भी ये ज्ञान दे पाऊं, देन आपको कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, वेरी सिंपल। वेरी कूल डूड, वेरी कूल। एंड आर यू अ गुड लिसनर? हाँ, मतलब पॉडकास्ट करते करते तो सुनी बन ही गया हूँ। हाँ, एंड सुनना पड़ता है उसमें। what are some of the bad interviewing habits जो आपने खुद की फिक्स की, या आप जो देखते हो जो लोग करते हैं, like while doing conversations? सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द इंटेंशन ऑफ द कॉन्वर्जेशन इज। लाइक इफ यू आर लेट्स से इंटरव्यूइंग समवन कि आपको उनसे जानना ही है, देन यू आर बेटर ऑफ हैविंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड, देन यू आर बेटर ऑफ डूइंग रिसर्च प्रिपेयर्ड, देन यू आर बेटर ऑफ हैविंग अ वेरी स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड. So that is one which people sometimes don't do. So someone might listen to this conversation between you and me like ठीक है यार, ये तो ऐसी कैजुअल बात करने में मजा आ जाता है, तो वो वहां पे काम नहीं करेगा. बट अगर आप एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन में एक एजेंडा के साथ आ रहे हो कि मेरे को ये 5 सवाल पूछना है, तो वो वहां पे भी काम नहीं करेगा. True. सो आई थिंक व्हाट आई मीन इसमें कुछ ऐसा ज्यादा हैवी नहीं है. इट्स जस्ट दैट व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ द कॉन्वर्जेशन. So let me modify the question. What are the some of the bad conversational habits, like on screen, off screen, जो आप लोगों की देखते हो कि यार जब कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि हम बातें यार सो बहुत करते हैं ना जी, हर जगह, सो आई थिंक हाँ, वो इट्स वेरी. नोटिस होता है। हाँ, So, one thing that I have noticed is some people don't necessarily want to talk as much. कि कोई I'm interviewing someone or I'm having a conversation with someone, किसी से बात कर रहा हूँ, मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बहुत सिंपल सा जवाब देके वो बात खत्म कर दी. There's no elaboration. So those are some bad things. So I think the lack of skill here is कि how do you get the other person to be comfortable enough to open up more, to then let's say go back to the thoughts and be like कि ठीक है ये तो बोल दिया मैंने, और क्या बात कर सकता हूँ इस बारे में. And that cannot be a very conscious thing. You can't be doing it very obviously कि हाँ थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ. That और बताओ वाला thing should be unsaid and it should be appreciated कि आप अपने आप ही बताना चाहते हो. So that is one thing that I've noticed. I've seen a lot of these podcast interviews around startup CEOs वगैरह वगैरह which end up having the same questions. सबके सवाल सेम होते हैं, सबके जवाब सेम होते हैं. And that is no one's fault, because in order to ask a person of stature a very controversial question, a question that would make them step back and think about how to answer, is not an easy thing to do. I think the problem, or let's say what was the word you used, ऐसे bad things ना, हाँ, bad is conversational that habits, people don't ask questions properly. आई थिंक right? सही सवाल पूछना एक बहुत ही जरूरी स्किल है जो सबको होनी चाहिए. एंड दैट वुड Right. मेक फॉर ग्रेट कॉन्वर्सेशन ऑलवेज. You know, सही सवाल क्या पूछना है. we have also had like more than 100 guests on the channel. मेरा भी एक अलग से पॉडकास्ट है, सेकंड लास्ट सपर, जहाँ पे लाइक नॉन फिल्म रिलेटेड लोगों को बुलाता हूँ मैं. मैंने एक चीज़ जो नोटिस की ना, कभी कभी हम डिस्कस करते हैं, जैसे टीम से कोई गेस्ट एपिसोड कर रहा है, लेट्स से इफ देयर इज एन एक्टर और समवन, और हम बाद में ना एक दूसरे को वॉइस नोट्स भेजते हैं, यार ये हुआ एंड
कभी कभी होता है ना, सो दिस इज ऑल्सो अबाउट, जैसे आप कह रहे हो ना जो शॉर्ट में आंसर कर देते हैं, तो बेसिकली मेरे को लगता है हमारे एंड पे ये जॉब होती है कि आर यू फाइंडिंग द राइट एंड पॉइंट। आपने यहाँ से पुक कर एग्जैक्टली लिया, यहाँ से पुक कर लिया, यहाँ से कर लिया, मिल ही नहीं रहा, एग्जैक्टली देन आप अपने मन में ही क्या ऐसा बोलो, और जब वो बांध टूटता है ना, मान लो कि पहले 25 मिनट वन वर्ड आंसर्स आ रहे हैं, फिर आपने कुछ ऐसा बोला हो जहाँ बंदा खुल गया, हाई फील आ सो जाती है। सो दैट इज व्हाट आई वाज, ये चीज मेरी भी चेंज हुई है कि इनिशियली वो 1 घंटे का एपिसोड होता था, बट नाउ जब तक मैं किसी इंसान के साथ 2.5 घंटे बात नहीं कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट पे बैठ के, मैं जा ही नहीं पाऊंगा एंड और डेप्थ ऑफ कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज द ट्रू, फर्स्ट 30 मिनट्स इज यू जस्ट एस्टैब्लिशिंग दैट रेपो एंड ट्रस्ट. हाँ ट्रू So ट्रू। that is why I prefer having offline conversations as well. जैसे हमने आज Because आधे घंटे बात की। या so that is one way of doing it. The other way of doing it is that you get the person in the same physical space. राइट, Your physical environment, your physical vibe, अगर उसमें comfort है तो इंसान automatically थोड़ा comfortable हो जाता है. So that राइट, is why I've started doing offline podcasts. मैं लोगों को घर बुलाता हूँ, बढ़िया उनको खाना वाना खिलाता हूँ. So it's a good whole evening that they have. कि वेरी पूरे आधे नाइस। दिन का प्लान है, मजा आता है सबको. So that is something that I enjoy now doing for podcasts. स्लो इंटरव्यू विद वेदांत रस्टी। दिनेश मिश्रा हाँ, के। I've only seen one episode उनका. I don't remember कौन सा था वो. But एक ही देखा है मैंने. But very similar vibes, हाँ which is unintentional, which हाँ, is good, I think. विच इज गुड ओनली, मतलब आई एम सेइंग इट एज अ Yeah, कॉम्प्लीमेंट ओनली, yeah, क्योंकि वो भी ऐसे लेके जाते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं, और हाँ. बहुत सही है। क्योंकि आई वाज सीइंग आपका, मैं आज ऐसी पॉडकास्ट चैनल देख रहा था आपका, एक शायद अभी वरुण माया के साथ 4 घंटे की कन्वर्सेशन है। That is, I mean, I did not intend it to be 4 hours. So when I invited Varun over, I was in Bangalore, I was staying with someone else. And फिर घर पे मैंने वरुण को बुलाया. We started recording, we did not realize 2 सवा 2 घंटे हो गए हैं. Varun had to go somewhere. तो मैंने कहा ठीक है, I've still got stuff to talk about. But उसको virtual कर लेंगे. Like कि अभी तू है यहाँ पे, तो तू घर आ जा, फिर वहाँ record कर लेते हैं. So then we ओह, ended up, and then I ended up going to his place. We recorded for 2 hours वहाँ पे. एंड मुझे लगा कि अब थोड़ा 4 घंटे ज्यादा हो जाएगा, 4 घंटे पर रुक जाते हैं, बट स्टिल एंडेड अप टॉकिंग. उसके बाद 4-5 और घंटे, उसको 6 बजे गया उसके घर से अपने घर वापस. इट वाज यार अ फन कॉन्वर्सेशन. नाइस है यार। एक चीज बताओ, ऐसे एक क्वेश्चन है, अब जैसे जो रोगन तो लाइव करता है अपने पॉडकास्टिंग, उसने पूरा सेटअप किया हुआ है, सो जैसे जब मैं देखता था, अभी स्पॉटिफाई का नहीं पता, अब इलॉन मस्क का ही आया है, और चल रही है 2-2 4-4 5-5 घंटे की कन्वर्सेशन। लेकिन लेट्स से समवन हैज टू टेक अ बाथरूम ब्रेक, एंड तो क्या होता है, लेकिन जस्ट अभी सोचा मैंने कि यार बात चल रही है और अनकट वो अनकट ब्रॉडकास्ट हो हो रहा रहा है. है कहीं पे, सो हाउ डू यू टेक अ बाथरूम? पानी तो पी लिया चलो, अब बाथरूम ब्रेक कैसे ले सकते पता नहीं यार, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया उसके पॉडकास्ट में कि लोग उठ के जा रहे हैं क्या बाथरूम. पता नहीं. लाइव अब तो लाइव, आई डोंट थिंक ही डज लाइव एनी मोर. हाँ हाँ, ये ओके। बीच में हो हम्म। सकता है चले जाते हो. नहीं, इट्स अ वेरी बिकॉज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू बिकॉज ही हैव। कट्स दीज कॉन्वर्सेशंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. नो, लाइक पहले लाइव होता था तो एक ही कैमरा होता था, आप लाइव में नहीं कर सकते वो ड्रामा. आई थिंक दैट इज अ लिमिटेशन दैट ही माइट हैव रियलाइज्ड एज वेल, कि हाँ रिकॉर्डेड ही करना पड़ेगा. लोग बेचारे वरना 2-2 घंटे में चले जाते हैं उठने. बिकॉज मेरे को याद है हाँ, क्या जब इलॉन मस्क आया था ना, उसका वही है, उसने डीएसएलआर्स को लाइव स्ट्रीम करने की प्रैक्टिस कर ली है, कि वो आती है ना कुछ मशीनरी जिससे आप अलग अलग कैम पे कट कर सकते हो, न्यूज चैनल्स पे या जैसे होता ओबीएस है। में हो सकता है ये सब हाँ, कुछ. ओबीएस में भी हो सकता है, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट। नाइस. तो जब पहली बार इलॉन मस्क ने वो ड्रैग लिया ड्रोन था, चलाए. मैं लाइव सुबह 7 बजे देख रहा था, मैं लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, ब्रो व्हाट द क्या फक इज हैपनिंग. ये क्या हो यार, मतलब काफी बड़ा ऐसे 9/11 मोमेंट टाइप था वो पॉडकास्टिंग का, इन हाँ। एंड दैट इज व्हाई ही आल्सो सेड कि यू नीड टू काइंड ऑफ रिकॉर्ड पॉडकास्ट इन अ वीडियो फॉर्मेट रादर देन ऑडियो, हाँ. कि क्योंकि कुछ चीजें Yeah, रहती है। I enjoy recording. Yeah, audio podcasts don't just, I mean, I don't see the vibe of it. मेरे को And भी plus, नहीं। audio platform pe listeners, I don't know how many listeners are there total Spotify पे, but I can assume without a doubt कि YouTube पे से ज्यादा है. हाँ हाँ हाँ, मेरे को लगता है आप बच भी Because जाते हो ना, कि जब आप ना, आपको नंबर्स रिवील नहीं करने होते, फिर तो सबका ही पॉडकास्ट है, जैसे that सबका is true. इंस्टाग्राम। That is हाँ true. जब आपको numbers reveal नहीं करने तो आप बच जाते हो. हाँ, क्या पता नहीं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपके Spotify पे कितने listeners हैं. आ रहे हैं Spotify पे, सुन रहे हैं लोग. या तो इट्स काइंड ऑफ, एंड आई वांट, जो भी मेरे से पूछता है ना कि मैं पॉडकास्ट चालू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो नंबर गेम थोड़ा तो खेलो, अदरवाइज ये हम्म. तुम्हें लगेगा कि तुम तो जो रोगन बन गए, और फिर तुम्हें पता चला But तो 3 साल से 27 लोग सुन रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा इंक्लूडेड। that is true. That is true. या But नहीं, सो Spotify पे हैं लोग.
I think I've got around 10-15,000 Spotify listeners, like followers on my podcast. Listeners उसमें से वही 20-30% ही होते हैं जो हाँ recurring होते हैं. रेकरिंग होता But Spotify has, मतलब Spotify वाला game has become थोड़ा मुश्किल now because a lot of people want to become podcasters for the है sake of it. हम्म Plus Spotify is in their own acquisition spree as well. तो हम्म उनके podcast ज्यादा push होते हैं. So that game is there. वो game YouTube पे नहीं है. YouTube is अभी तक थोड़ा democratic. या अच्छा अभी काम तक करोगे तो दिख ही जाएगा लोगों तक. नाइस मेरे को पता है याद आया कि मैंने कुछ टाइम पहले अभी बात करते करते याद आया कि मैंने आपका और कंटेंट देखा है इंस्टा पे रील्स के फॉर्मेट में जहाँ पे आप शायद ऐसे टीवीएफ की बात कर रहे हो या ओटीटी की बात कर रहे हो कि ये चीज़ ऐसे क्यों वर्क करती है मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि इज देयर अ वीडियो ऑन टीवीएफ आल्सो Yes, there is a video I think on TVF aspirants which I made, but I've made a bunch of हाँ videos on TVF and their shows. या तो अभी जैसे आप ये भूल भुलैया 2 वगैरह देख रहे हो अब तो मेरे को लगता है कि आप रिव्यू नहीं करते इनको सो डू यू वॉच दीस थिंग्स फॉर फन जैसे नई अक्षय कुमार वाली Yes. नाइस Yeah, one time watch है, मजा आएगा. हॉल में जाके देखोगे तो मजा आ जाएगा. कभी थोड़ा हॉरर है, कभी थोड़ी कॉमेडी है. तो I've stopped judging movies at this point. So there's a no good movie or a bad movie. If I'm not enjoying a movie, मैं उसको बंद कर दूंगा. It's a very simple, as simple as that. जैसे RRR मेरे को खत्म करने में 4 दिन लग गए. आधे आधे घंटे की मैंने देखी है 4-5 दिन लगा के. तो दैट बाय नो मीन्स कि पिक्चर बुरी है. वो तो मेरे कोई जमा नहीं, आधे घंटे देखा मैंने, मैं फिर बोर हो गया. मतलब बोर नहीं हुआ, मैं थक गया. काफी इंटेंस मूवी है. तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेता है, कल देख लेंगे. अब मैंने बॉयज के 3 एपिसोड आए, वो तीनों मैंने एक गन रो में देख लिए 3 घंटे लगा के. दिस जस्ट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ मूड एम आई इन टू वॉच व्हाटएवर. I think that is the problem with a lot of critics also on YouTube. There are hardly anyone. I think there's just Anmol, Tried and Refused production वाला, that actually does it with all intensity and dedication. बट बाकी लोगों को तो पता है कि यार इस मूवी के बारे में अच्छा बोलोगे तो व्यूज़ आ जाएंगे, बुरा बोलोगे तो भी व्यूज़ आ जाएंगे. तो वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अच्छे में ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे या बुरे में ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे. एंड दैट हैज़ बिकम अ गेम दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन. So I don't consume those. I don't create those reviews also, because for me also it became that same game. इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको याद है आप स्टार्टिंग में जब मेरे से पूछ रहे थे ऑफलाइन जब आप बात कर रहे थे कि थोड़ा लाइक हाउ डू वी डू थिंग्स सो वी हैव 1100 वीडियोस ऑन आवर चैनल लेट्स से 40-50% वीडियोस आर अबाउट मूवीज ऑन इट तो मेरा हमेशा से ना हमने एक रूल बनाया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मान लो चलचित्र का है अमेंडमेंट्स फ्यूचर में हो सकती है आज तक तो नहीं हुई अभी नहीं. in these 1100 videos there are 0 reviews everything is a recommendation so if something is bad we don't talk about it so ये चीज हमें लगता है कि इस पे हमने बहुत अग्रेसिवली काम किया है नुकसान भी हुआ है मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि मैं नेगेटिव चीजों की तो बातें ही नहीं कर रहा लोगों को बस 2-4 चीजें पता है जो नेगेटिव है कि वैभव को तमाशा मूवी नहीं पसंद और ऐसे 2-4 चीजें वो मैं कभी कभी फन के लिए स्ट्रीम्स में बता देता हूँ बट इन जनरल यार नेगेटिव बातें करने का मन नहीं करता नहीं, it's also, yeah, because it's very simple. If you realize it while you're doing these things ना, हाँ कि आप नेगेटिव बोलोगे तो ज्यादा अटेंशन मिलता है. हाँ Because negativity sells, यार. It's not just the negativity that sells, by the way. ओके It is the extreme of emotions that एक्सट्रीम ऑफ इमोशन सेंस ट्रू वेरी ट्रू So you can operate in either of these two extremes. You can operate on very good or very bad. वेरी गुड पे लंबे टाइम के लिए ऑपरेट करना मुश्किल है, बिकॉज इतना ऑप्टिमिज्म होता नहीं है जीवन में. लाइफ ऑलवेज एंड्स अप कमिंग टू द मिडल. टुवर्ड्स द एक्सट्रीम बैड करना आसान है बिकॉज आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो. द प्रॉब्लम विद दैट इज दैट द मोर यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इट, वो बन तो रहा है ना, वो आप दुनिया में दे तो रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो होगा ना. तो फिर वहां आप उस साइकिल में, इट्स अ विशियस साइकिल दैट जस्ट कीप्स टेकिंग यू नीचे. और ये And then यूट्यूब के again, अलावा हर जगह अप्लाई होता है ये तो लाइफ की फिलोसफी है, ये तो हाँ लाइफ में, नॉट जस्ट यूट्यूब पे बस को आपको दिख जाता है कि ठीक है ये इंसान से बेकार बातें करता है, बेकार चीजें देखने को यहाँ चले जाएंगे. एंड इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द सेम काइंड ऑफ पीपल. So if your goal on YouTube or in life also is to accumulate good people, good experiences, something that gives you thoda happiness, something that makes you feel good अंदर से, तो talk about good things. I mean, you can talk about bad things also, ऐसा नुकसान नहीं है, but not with the intention of getting those extreme emotions वाला thing. But the reality again is extreme emotions है. जैसे आपने अपना बताया कि जो आपका शॉर्ट्स वाला चैनल है उस पे हम्म. यू हैव लाइक मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स नाउ बट जैसे आपने कहा कि वो इतना यूजफुल नहीं है सब्सक्राइबर वाला जो पूरा बेस है बिकॉज यू काइंड ऑफ गॉट द रॉन्ग ऑडियंस लाइक इन दैट Yeah. रिगार्ड तो like is it okay getting slow growth with like good audience and So compared to हाँ I'll
try and explain it on how I justify it for myself. My intention is to get reach to a person who will keep coming back to me. I don't want 1 million subscribers who never return. I want 500 people, 1000 people, 100 people, एक इंसान जो अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा तो आके देखेगा उसको. That is what I want. And then the responsibility is on me to not disappoint those people who are returning. Okay, that means that I always have a benchmark that I have to cross or match every time. Once you start playing the numbers game, I want that many subscribers, I want that many things, I want this many views on my videos, then you are playing the top of the funnel game ultimately. कि मुझे बस maximum लोग चाहिए जिनको पहुंचना. There's nothing good or bad about either of these games, by the way. You can make shorts and you can get to 1 million subscribers, 10 million subscribers if you cater to the right audience. But what you have to look beyond individually as a creator is what kind of audience do you want to curate? What is the bottom of the funnel that you want? तो वो मेरे लिए है वो लोग जो बार बार आएंगे वीडियोस देखने. Probably they because the things that I talk about, maybe how I talk about, maybe how I present, maybe the opinions that I share. तो मुझे वो ऑडियंस केटर करनी है. Of course, I will still have to somehow play the top of the funnel game ताकि लोग नए आए. But my end goal is to find those people जो बार बार आए. I think I heard Tanya Khanijo speak this once, that a creator has to create 3 different type of content. One is the top of the funnel, which makes you discoverable to a lot of new people. 2 is the kind of content that will keep people, a fraction of those people coming back. And 3, which is probably very important as well, is what you actually want to create. ये कहाँ सुन सकते हो ये चीज जो आपने बोली? बहुत ही कूल लगी मेरे को. यार मुझे नहीं पता, तान्या ने या तो मेरे को ऑफलाइन बोली थी या फिर किसी उसने स्ट्रीम में बोली थी या फिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बोली थी. आई डोंट रिमेंबर, बट दैट थिंग हैज जस्ट स्टक विद. तो अगर आप बॉटम वाली 2 चीजों को कंबाइन कर सकते हो कि जो आप बनाना चाहते हो और जो लोग देखना चाहते हैं वो सेम है, जो बार बार देखना चाहते हैं, देन यू आर इन द राइट स्पॉट. Then you can do these videos like I did at Sandeep Maheshwari video, which I know will get a few new people in the channel. I can do वो नंबर 1 वाला है जो फनल बढ़ाने वाला वीडियो. हाँ, वो टॉप ऑफ द फनल वाला है. हाँ. बट उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाया, हाउ डू यू बिकम ग्रेट इन लाइफ, इज अ फिलोसॉफिकल वीडियो. Nice. Not many people are going to watch it, not many people are going to understand it, because it's a phase of life video. हो सकता है तुम उस वीडियो को सेव करके 5 साल बाद आओ कि यार मुझे अब ग्रेट बनना है, क्या बोला था वेदांत ने. So then those people will come and watch it. So you have to keep a balance between those 2 things. So you can chase numbers, but you have to understand why are you chasing those numbers. Very nice. I think that is how I justify it to myself. And I think यार इससे confidence भी मिलता है. I think and this is particularly what happens when I talk to fellow YouTubers ना कि hey man, like सबकी ये वाली जर्नी रही है और जो मतलब और यहाँ पे there are a lot of good parts to also look at, dude. तुम कंपटीशन वाला गेम खेलोगे तो तुम कंपटीशन में रह जाओगे. You have to again play that own individual game. कि तुम्हारे खुद के ultimate individual goals क्या है. Because YouTube is a very funny space. You can be very popular today and you can die off tomorrow. Or you can be not popular at all for 6 years and then pop up on the 7th year. So it's about कि तुम क्यों खेल रहे हो गेम, क्यों बन रहे हो यूट्यूबर. If the intent is to connect with more people, make good content so that whenever someone watches it, they feel good about it. Do your best, keep optimizing, keep improving, then it's a good game to play. If your goal is कि मेरे को फटाफट साल के एंड तक 1 million सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, then it's a different game you are playing. There are different rules that you have to play by. तो वो स्टेप 1 है फिगर आउट करना कि तुम क्या गेम खेल रहे हो और क्यों खेल रहे हो. एंड दिस रिमाइंड्स मी कि एक बंदा था ना जो पैराग्लाइडिंग कर रहा था. अरे पैसे ले ले उतारते. मैंने उसकी जर्नी थोड़ी सी देखी थी. सो दैट वीडियो वेंट वायरल. ही गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज, लैक्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज. उसके बाद क्या हुआ, उसने बहुत कंटेंट बनाने की कोशिश की. उसने उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की. अगेन कहीं से छलांग लगा रहे हो, वो रेप्लिकेट नहीं हुआ. एंड द ड्रॉप जो उसके 1 मिलियन है और उसके फिर 1000 2,000 व्यूज आ रहे हैं. एंड आई जस्ट फेल्ट बैड कि अगेन ही स्टार्टेड प्लेइंग द गेम विदाउट नोइंग व्हाट गेम टू प्ले. So going viral is the worst thing that can happen to someone, to be very honest. A creator, if someone wants to become a creator, ये आप ही का कोट है. ये तो मैं लिखूंगा. हाँ मतलब I experienced this in my own way. तो मैं पता नहीं, हाँ मतलब कोट कर देगा. Being viral is the worst thing that can happen to a creator. Is something that I've said a lot of times, and it's true. Because once you go viral, then you have no clue why you went viral. सबसे पहले तो, and you don't know how do you handle this new audience, because you're in a dilemma then कि क्या मैं ये दोबारा करूं जिससे और लोग आए, या मैं इन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं उस चीज में जो मैं बनाना चाहता हूं. What do I do? So it's so overwhelming
that people lose track of what they want to do, which is why it is much better to grow slowly than grow fast. Because जितनी जल्दी चीज ऊपर जाएगी उतनी जल्दी नीचे भी आती है ना, तो इट्स बेटर तो आप धीरे 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 तो बढ़ो ताकि आपको धीरे धीरे नीचे आने वाला भी उतना ही स्लो हो. Let's talk about something very specific now. क्या हाँ. किताबें पढ़ते हैं and what's your relationship with books? So I am not a non-fiction reader. I've had a love for literature throughout my life since grade third. हमारे स्कूल में एक ऐसे नॉवल लगा देते थे थर्ड क्लास से ही कि ये नॉवल आपको पूरे साल पढ़नी है. So I've read books like The Count of Monte Cristo, Treasure Island थी, और short stories का collection, The Lone Wolf, ऐसे The Lone Wolf नहीं, White Wolf. All of these books I've read from a very young age. And I used to go to library, read ये proper Hardy Five, Hardy Boys, Fast Five, Famous Five, Goosebumps. I've read a lot of Goosebumps. So ये fascination बचपन से हो गया था. इतना कि once I started reading Shakespeare in class 9th and 10th and 11th and 12th, I made it a point कि I want to study literature in my life. So I've got a huge inclination towards reading fiction. So I did my undergrad in literature and I've always been a fiction reader. I've read non-fiction books, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी, but I enjoy reading fiction more. So I think I was in class 9 जब मेरे को मेरा पहला फ़ोन मिला था. Nokia 5300 करके वो फ़ोन था, इतनी छोटी सी स्क्रीन थी, उसकी स्लाइडर था, बड़ा बढ़िया फ़ोन था. आई यूज्ड टू पायरेट बुक्स ऑन दैट फ़ोन. कि पुरानी किताबें, वो छोटी स्क्रीन में 4-4 लाइन आती थी. ऐसे मैंने सारी पर्सी जैक्सन, सारी टॉयलाइट, सारी हैरी पॉटर्स, ये सारी मैंने ऐसे रज़ाई के अंदर छुप के ऐसे पढ़ी हैं फ़ोन पे. तो फिक्शन इज़ वेयर माई हार्ट इज़. Non-fiction is something that I read for the fun of it. कभी-कभी, बहुत ही rarely. And fiction में let's go to sub-genres now. Which are your favorite genres? So, there have been phases where I've read a lot of romantic comedies. There have been phases where I've read a lot of Lee Child type thrillers, where I've read a lot of Dan Brown. There are phases where I've read ऐसे बहुत ही interpersonal dramas. There was a very long phase where I was just into a lot of nihilism and Russian literature. There was a long phase during my college where I was into the classics a lot. There was a phase where I read a lot of poetry. I wrote a lot of poetry. I even had a poetry Instagram page. Ended up publishing a poetry book. तो ऐसे phases आते हैं. अभी फेज मेरा चल रहा है हिंदी लिटरेचर पढ़ने का. तो मैं प्रेमचंद वगैरह पढ़ रहा हूँ अभी. मतलब किंडल पे फ्री में मिलती हैं किताबें ये प्रेमचंद वगैरह की, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ. इन पे आपने वीडियोस बनाए हैं बुक्स पे, लाइक ऑन योर चैनल? I tried making videos on book recommendations वगैरह on a channel that I started. It's called You and Rusty, where I wanted to talk about productivity वगैरह. I did not enjoy doing it as much, so I did not continue doing it. Okay. And like, do you have a fascination for sci-fi? I haven't read a lot of sci-fi. I've read H.G. Wells, Purana. There's one book that I've read which is a good book. It's the first 15 lives of Harry August or Henry August. It's a book about a person who just keeps getting rebirthed in the same timeline. तो बहुत ही fascinating time loop kind की story है वो. I've not read a lot of science fiction उस हिसाब से. साइंस फिक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं है. लाइक आई रेड दी वैसे पुराने इनविजिबल मैन टाइप की किताबें, द टाइम मशीन वाली किताब, दीज आई हैव रेड, बट नथिंग ऐसे फैसिनेशन नहीं है साइंस फिक्शन से. सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स कौन सी रही हैं आपकी लाइफ में, लाइक इफ यू हैव टू नेम अ फ्यू? देयर इज नो ऐसे ऑर्डर कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बट द बुक्स दैट आई कीप, लाइक जो जैसे दिमाग में रह गई हैं किताबें, वन ऑफ देम इज क्राइम एंड पनिशमेंट. इट्स अ वेरी हेवी इंटेंस किताब. चेतन भगत की एक दो किताबें भी हैं फॉर सम रीजन. आई लाइक चेतन भगत द इनिशियल बुक्स दैट ही रोट. आई हैवंट रेड द न्यूअर कपल ऑफ वंस दैट हैव कम आउट. वो है, I've loved reading a lot of the first couple of books from Dan Brown, the Angels and Demons and Da Vinci Code. I think the Almanac of Naval Ravikant is something that I read last year, so that is a book that I keep going back to because it's got very interesting tidbits about life which are relevant at this point. शेक्सपियर काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को स्कूल टाइम पे, मतलब स्कूल में ही पढ़ाते थे, बट आई वेंट ऑन टू रीड बियॉन्ड दैट इज वेल. देयर आर फ्यू शॉर्ट स्टोरीज दैट जस्ट कीप कमिंग बैक टू योर ब्रेन. एक ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, बट दिस स्टोरी कॉल्ड द स्नाइपर और आ स्नाइपर. दिस अ शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड हाउ मच लैंड डज अ मैन वांट. तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट हैव स्टक इन माय हेड. ऐसे अभी मेरे को ऐसे याद करने के लिए गुड रीड वाला अपना वो खोलना पड़ेगा अकाउंट. आप खोल सकते हो, पता है a lot of guests do it, like कि अभी कोई नेटफ्लिक्स खोल लेगा, कोई किंडल खोल लेगा और फिर वहां से बात कर सकते हैं, like just giving you an option. मैं गुड रीड्स खोलता हूँ अभी, रुको. So Goodreads is something that I discovered very early in my life
आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई डिस्कवर्ड गुडरीड्स अर्ली, बिकॉज ऐसे मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, कौन कौन सी नहीं पढ़ी है, वरना बट लॉग इन Do you करना do पड़ेगा the quickly. yearly challenge on Goodreads? यार आई Reading. हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट इट, आई ऑलवेज सेट अप कितना इट टारगेट एज कितना 52. देते हो? 52 के 52. रखता हूँ मैं फॉर सम रीजन. कभी बहुत टाइम से पूरा नहीं किया है मैंने. लाइक दिस ईयर आई हैव रेड 3 बुक्स अभी तक, और वो तीनों की तीनों मैंने जान में पढ़ ली थी. उसके बाद से मैं ऐसे किताबों के बीच में घूम ही रहा हूँ बस. सो द मोस्ट रीसेंट नॉन फिक्शन बुक दैट आई रेड वाज, इट्स कॉल्ड रीवर्क, एंड इट्स गुड फॉर ऐसे इंडिविजुअल पीपल दैट आर वर्किंग इन दिस स्पेस. इट्स परफेक्ट फॉर देम. The other book that I read was, it's called Design for Hackers. So that is a book that I read a while back, like when I was starting out my job. It's by an author called David Kadavi. I'm supposed to speak to him next week for the podcast. I've read this book in my first year of college, called The Definitive Book of Body Language. Now I know a lot of people will come out to say कि body language अच्छा है नहीं है, but once I read that book, it got me interested in how people behave. Not just body language, but generally in life also. तो वो है. Now there is a real book. I mean, I don't know if you'll call it fiction. How do you call a book that is based on? It's a story, but it's based on real life. Semi autobiographical. I don't know. हाँ, it's an autobiographical book. It's called हाँ. Until We Meet Again, and it's a beautiful, मतलब harrowing story about the Holocaust. A family that got dispersed during that Holocaust, and how they eventually survived it and came back together बाद में उसके बाद. So that is a book that has been really impactful for me in my life. और हाँ, फिक्शन खत्म, नॉन फिक्शन खत्म हो चुका है, बस फिक्शन फिक्शन बचा Let's है. move to fiction. एक ना एक बुक स्टोरी है, माइकल ग्रैंट करके एक वो है ऑथर. इट्स अ यंग एडल्ट फिक्शन स्टोरी. इट्स कॉल्ड गॉन सीरीज. उनकी 6 किताबें हैं. आई समहाउ डिस्कवर्ड इट व्हाइल आई वाज पायरेटिंग बुक्स बचपन में, एंड मैंने वो पढ़ी किताब, एंड वो इतनी खतरनाक सी स्टोरी है that I ended up waiting for the next 6 years for the 6 books to come out and read them. The Gone series is a good one. I've read a lot of these ऐसे बिल्कुल ही offshoot kind of किताबें जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा, just because वो free में मिल गई थी मेरे को. This author called Simone Alexis. It's a book called How to Ruin Your Boyfriend's Reputation. It's a very teenage kind of a thing. इनकी 3 किताबों की सीरीज है, तो वो मैंने पढ़ी थी. काफी सिडनी शेल्डन पढ़ा है मैंने, काफी मैंने जेफरी आर्चर पढ़ा है. Like Cain and Abel is a book that ब्यूटीफुल, मजा ही आ जाता है उस किताब को पढ़ के. मतलब वो पहली वाली पढ़ी है मैंने, उसके बाद वाली नहीं पढ़ी है, बट वो काफी अच्छी है. Got it. लेट मी ब्राउज थ्रू द लिस्ट अगेन एंड सी. आप वो देते हो स्टार्स रेटिंग देते हो Goodreads पे? हाँ, मैं स्टार्स भी देता हूँ. 5 stars देते हो, like yeah, is it like what's your ये देखना metric है there, like what's your metric of giving rating? यार, वही है, इवेंचुअली समथिंग इज इधर 2 स्टार और 4 स्टार. नथिंग हैज येट एंडेड अप बीइंग अ, मतलब है 5 स्टार वाली होंगी. लाइक जब मैंने वो पढ़ी थी ना 13 रीजंस व्हाई पहली बार, आई वाज इन क्लास 10th, तो वो बुक बहुत ही इंपैक्टफुल लगी थी मेरे को तब. तब शायद उसको मैंने 5 स्टार दे दिए होंगे. हाँ, मतलब वैसे टीनेज में मैंने बहुत सारी टीनेज वाली किताबें पढ़ी थी ये. Have you read any Murakami? नहीं, आई हैव नॉट. I think आई you'll हैव really नॉट. enjoy it. आपको वो, because so I for one am into sci-fi a lot and magic realism. और magic realism is always very interesting, और I think मतलब sci-fi magic realism this like मेरे को लगता है थोड़ा बहुत correlated होते हैं. So if you don't ever want to get into hardcore sci-fi directly, magic realism is a very interesting universe to like at least experiment with. So I think मेरे को I would love to know what you think of like, जैसे मैं एक डालता हूँ किताब मैं उसको. आपको recommend करता हूँ, Blind Willow Sleeping Women. It's a book by Murakami. इसकी रेटिंग थोड़ी ना कम है, मतलब 4 से कम है Goodreads पे ओवरऑल, बट इसमें कुछ कुछ शॉर्ट नहीं, ऐसे स्टोरीज. ऐसे हाँ रेटिंग देख के किताब तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ. हाँ, तो ब्लाइंड विलो स्लीपिंग, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट गिफ्टेड बुक आल्सो. इट हैज ओह अराउंड नाइस. 20 मुराकामी शॉर्ट स्टोरीज. इज अ गुड हाँ, so it's शॉर्ट. a short story book, no? हाँ Short हाँ stories I end up reading. Short stories I enjoy reading. हाँ. वो अच्छी होती हैं. एंड इट्स ऑल्सो वेरी शॉर्ट स्टोरीज एक अच्छा, मतलब वो डेटिंग का स्टाइल भी होता है. इफ यू अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन करना है किसी ऑथर के साथ, तो उससे पहले इट्स अ गुड वे टू डेट समवन की हाँ, 1-2 डेट्स पे जाके देख लिया शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के. सो हाँ, वो तो है. So there's a book called A Technique for Producing Ideas. अभी मुझे याद आया, हम बर्नआउट की बात कर रहे थे. It's not even a book. It's a 5 page का essay. It's available for free on Google. James Webb Young का है. It's a 5-step thing. It's free. तो वो काफ़ी अच्छा है अगर लोगों को ऐसे आइडिएशन करना हो तो. मतलब फ्री में मिल सकता है, आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो 500,000 रुपये का अगर आपका मन करेगा तो, बट फ्री में मिल सकता है उस पर.
There's one other book that I just came across, which is Looking for Alaska is a book that is imbibed in my brain just because how beautifully sad that story is. तो ऐसी ये किताबें हैं. उसके अलावा I've read a book, couple of books on let's say film making, like जॉन ट्रूबी का द एनाटॉमी ऑफ अ स्टोरी पढ़ा है मैंने. काफ़ी अच्छा किताब है. वर्ड्स ऑन स्क्रीन करके एक किताब है जो आई हैपन टू रीड विच has taught me more about how design works and how publishing वगैरह का हिस्ट्री वाला वो सब चीज़ें पढ़ी हैं वैसे. So nice यार, this was a good segment on books and हम I think Goodreads के आगे बढ़ सकते हो. मैं तो कह रहा हूँ मेरा तो गुडरीड्स अकाउंट पब्लिक है. अगर किसी को ऐसे हाँ. जानना हो कि क्या क्या पढ़ा है मैंने तो वेदांत आपका डाल कौशिक देंगे हम लिखा डिस्क्रिप्शन में Goodreads. हम इंस्टा डालते लोगों का, आपका Goodreads डाल देंगे. है. नाइस. उसमें एक ऑथर प्रोफाइल भी आएगा. उसमें आपको दिखेगा श्रीन द एंथोलॉजी. वो भी हमारी लिखी हुई किताब है एक. मतलब अरे किताब नहीं. तो it's a so I had an Instagram page with a school friend of mine. She was also into poetry. I was into poetry. And फिर हमने कहा कि ठीक है इसको यूज करके एक किताब पब्लिश करते हैं. So we got all of our viewers to send us poems and then we curated it into a narrative. तो काफी अच्छी किताब है. आपने श्वेताब की पढ़ी है, रूडेस्ट बुक या Yes, I've उनकी? read the Rudest book. Yes, movie. It's also a good book. Like it's a good book for people to get into the whole self improvement thing. It gets a lot of fundamentals right. So it's a good book. So we have discussed books now. I also want to talk about, हमने movies की तो हम ऊपर ऊपर से बात कर ही रहे हैं. TV Yeah. shows के साथ कैसा आपका रिश्ता, and like what kind of TV shows are you into? I've got all of the ones that everyone watches. Friends, How I Met Your Mother, Tumhara Modern Family, Big Bang Theory. I've consumed a lot of those. The Office. Then I've gone on to watch again Breaking Bad. I don't think I spend a lot of time watching TV shows as much. Like I'm really into The Boys these days because का नया season आया है तो वैसे. I've watched Inventing Anna recently. I've got The Russian Doll in my watch list तो वो मेरे को देखना है. डार्क मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था शो तो वो देखना है मेरे को. मतलब दोबारा देखना है ऐसा मन कर रहा है. आई फिनिश्ड वॉचिंग रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग्स का नया वाला सीजन. तो दैट आई हैव सीन. The newer one is better than the all of the last ones, and the last ones were very good. So this one is actually really good. देख सकते हैं. मतलब काफी entertaining है. It's a mix of all lot of different genres, which is why I think it's more fun. It's got horror, it's got action, it's got comedy. तो काफी अच्छा show है. What else have I seen? I've seen Seinfeld. Seinfeld and a lot of people don't watch these days. What else do I enjoy watching? I've seen some Indian shows as well. But that is back when I was reviewing these shows. ये तुम्हारा Sacred Games, Woot के 2-4 shows, Amazon के 2-4 shows. हाँ यही है टीवी shows के साथ रिलेशनशिप तो. I watch a lot of तारक मेहता when I'm home. Nice. क्योंकि घर बैठे बैठे वो शाम को 8:30 बजे सोनी के सब्सक्रिप्शन पे ना वो सबसे ऊपर दिखाता रहता है मेरे घर वालों के. मैंने कहा ठीक है टाइम पास करना है तो तारक मेहता चला लेते हैं थोड़ा सा. तो वो होता है. टीवी shows इतने judiciously I don't sit and watch. They require more commitment ना टीवी shows. Yeah. And I But can't yet get into a routine कि रोज एक एपिसोड देखना है. अगर 10 एपिसोड अवेलेबल है तो मैं 10 के 10 देखना चाहूंगा. टीवी शोज की कुछ काफ़ी शानदार रिकमेंडेशंस है हमारे चैनल पे, सो देख सकते हो टू मेक योर लाइफ इजियर. बिकॉज लेटली जब मेरा मूवीज वाला बर्नआउट हुआ था, आई जस्ट स्टार्टेड वाचिंग शोज. सो टीवी shows. एंड माय लाइफ का एक फिलॉसफी इज ओके, सो टू बी इन हैप्पी इन लाइफ ऑलवेज बी वाचिंग वन HBO शो. हमेशा एक One HBO का HBO show. शो, एक HBO शो लाइफ में Oh हमेशा yes, I've चलते seen रहना चाहिए. HBO shows as well. I've seen Game हाँ of Thrones. I've seen हाँ. तुम्हारा ये Westworld. I've हम्म seen Chernobyl. I've seen हम्म तुम्हारा ये Silicon Valley. What else have I seen? तो ऐसे में like I don't categorize them. जैसे अभी मेरे को याद आ रहा है मैंने सारे Marvel वाले टीवी shows भी देखे हुए हैं. हाँ अभी मैं अपना Hotstar खोल के बैठूंगा तो मेरे को और टीवी shows मिल जाएंगे. मेरे पास सब्सक्रिप्शन सबका है. मेरे पे Amazon, Hotstar, Zee, Sony, Voot सबके सब्सक्रिप्शन है. अभी मैंने लैंगडन देख रहा था मैं. हम्म रॉबर्ट लैंगडन का शो आया था एक. हम्म मतलब रॉबर्ट लैंगडन इज द डैन ब्राउन कैरेक्टर. या तो उसका शो आया था द लॉस्ट सिंबल का. मैंने उसके 4-5 एपिसोड देखे. वो बचा हुआ है मेरा देखना. ये कहाँ पे है? ये है वूट पे अभी. Got it. वूट पे है ये. तो ऐसे छोटे छोटे शोज देखते रहता हूँ. आई लव कम्युनिटी अलॉट. कम्युनिटी काफी अच्छा शो है. पार्क्स एंड रेक वो भी काफी अच्छा शो है. हाँ यही है. ऐसे मेरे को ऐसे ऑफ हाँ द टॉप ऑफ माय हेड ऐसे याद नहीं आ रहे हैं ऐसे इट्स आउटलायर शोज. हाँ तो हाँ, मेन स्ट्रीम जरूरी वाले में नहीं हम है. मैं स्टिक कर वही कैसे जाएंगे. कह रहा था, जरूरी नहीं है कि हाँ बताने मेन ही स्ट्रीम वालों बताना है. पे स्टिक करते हैं. यही देखे हैं हाँ हमने. ऐसा कुछ अलग नहीं देख रहे हैं हम. बट देयर इज लाइक अ, यहाँ पे मैं बस वो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन आई से ऑलवेज बी वाचिंग वन HBO शो, इट्स लाइक कि जब कोई शो खत्म हो रहा होता है ना तो एक वॉइड आता है एंड कि यार 5 लाइक सीजन्स देख लिए इसके वगैरह, तो स्टार्ट
like pick up a show before it ends और वो हमेशा चलते रहना चाहिए. In general मेरा happiness quotient हमेशा high रहा है. Every time there is जब शो a जब कोई लंबा शो चल रहा होता है. और एचयू के अलावा भी जैसे अभी मैं मिस्टर रोबोट अब देख रहा हूँ. एंड आई हैव I'm सीन दैट, दोनों सीजन हाँ देखे हैं मैंने. इट्स गुड शो. I'm liking मिस्टर रोबोट नाउ. और इससे पहले लाइक जैसे अभी बेटर कॉल सॉल में एक ब्रेक आ गया 2 महीने का, तो आई या सडनली डिड नॉट हैव एनीथिंग आई टू हैवंट वॉच. सीन द लास्ट 2 सीजंस, इसीलिए कि जब वो खत्म हो जाएगा तभी देखूंगा एक साथ बैठ के. नाइस. तो I think there are a lot of shows that I want to pick up and watch. It's just that you have to consciously sit down and do it. So I've started to do that very recently. ऐसे बैकग्राउंड में शो चला के देखना ना मेरे को अब पसंद नहीं आता है. पहले देख सकते थे आप, हाँ हाँ थोड़ा हाँ काम कर रहे हो बैकग्राउंड में देख सकते हो, बट आई नाउ वांट टू पुट इन द टाइम एंड एफर्ट टू फोकस एंड वॉच शिद्दत से. या. वो करना मैं चाहता हूँ आपसे. तो अगर आप हॉटस्टार पे जाओगे एंड इफ यू जस्ट टाइप इन एचबी ओरिजिनल्स एंड फिर काफी जो सारे शोज आ जाएंगे. रिपोजिटरी आती है ना, और द वंस अच्छा. जिनके आपने नाम नहीं सुने, जस्ट क्लिक ऑन दोस कि यार ये नहीं सुना, को क्लिक करते हैं और वो फर्स्ट हाँ डेट के जैसे देख लो. लेट्स सी व्हाट इट हाँ इज, because that will really like get you into the whole universe of like TV हाँ, shows मतलब अभी अच्छा है नहीं वो, एक था. रूटीन में कुछ होता रहता है देखने को भी. ठीक है, हाँ 1 घंटे खाली बैठा तो यही देख लेते हैं, ब्रेक राइट लेने के लिए देख लिया थोड़ा. बट आई राइट. थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू देन सेट अप अ लिमिटेशन ऑन योरसेल्फ कि नहीं ठीक है एक एपिसोड देखना है, हाँ 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 धीरे हाँ. धीरे देखेंगे शो को. बिकॉज वो आदत है ना एक साथ बिंज वॉच करने वाली, वो चेंज या. करना पड़ जाता है फिर. Do you meditate? आई ट्राइड नवल का 60 डे 1 आवर अ डे वाला थिंग. आई डिड इट फॉर 30 days. फिर लाइफ में रोज 1 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो वो 30 दिन के बाद में रुक गया. बट इट्स अ लॉट ऑफ फन. Fun in the sense that it is incredibly tedious and difficult to sit for 1 hour and do nothing. But for the first week, it was horrible. By the second week, I started enjoying it. By the third week, I enjoyed it more. But उसके बाद फोर्थ वीक में फिर चीज़ें हो गई लाइफ में जो मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिल पाया. तो फॉर 60 days डूइंग इट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू दिस ईयर. ये 60 days एट अ स्ट्रेच करना है. तो माई रूटीन यूज टू बी वेरी नाइस. आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू इट, विच वॉज कि शाम के 8-9 बजे आपने काम बंद कर दिया. You shut down all the screens, you turn off everything. You sit and meditate for an hour, do your dinner वगैरह, and then get into bed, read and sleep, and then wake up early morning next day. तो वो रूटीन वापस थोड़ा चाहता हूँ आना लाइफ में. वो हो जाएगा तो मेडिटेशन भी हो जाएगा, फिर किताबें भी हो जाएंगी. तो वो चल रहा है. जैसे अभी आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड द स्टेटस गेम, और उसके साथ आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड द कंटेंट कोड. तो ये सारी चीज़ें ऐसे आधे आधे घंटे रात में पढ़ते पढ़ते बढ़िया होती है. इसमें थोड़ा नींद भी आ जाती है पढ़ते पढ़ते, और ऐसे पढ़ने वाली बात भी हो जाती है. वो है. Can I recommend you a book? Like यस प्लीज. एक शायद पढ़ी भी हो. इसके बारे में मैंने अभी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, बट आई हैड बीन टॉकिंग इन माय बुक क्लब जो हमारा हाँ. पेट्रन्स का है. सो इट्स कॉल्ड ब्रेथ द न्यू साइंस ऑफ लॉस्ट आर्ट. ये एक्चुअली मैंने वाया जो रोगन पॉडकास्ट से डिस्कवर की थी. किसी गेस्ट ने इसके बारे में बात व्हाट की थी. इज दिस बुक अबाउट? इट इज अबाउट हाउ नो वन एवर टॉट अस हाउ टू ब्रीथ. एंड मैंने पूरी नहीं पढ़ी. मैंने पहले के लाइक एक चैप्टर पढ़ा और लास्ट चैप्टर पढ़ लिया. और लास्ट चैप्टर में इसकी समरी है. एंड और मैंने गुड रीड्स पर एक बहुत सही चीज है. सो आई फॉलो दिस गाय ऑन गुड रीड्स कॉल्ड लोटस चैंडलर. ही इज द सीईओ ऑफ गुड रीड्स. तो वो क्या करता है, वो जब कोई किताब पढ़ता है ना तो उसके हाइलाइट्स भी शेयर करता है. अगर आप किंडल पे अच्छा. डालते हो ना तो पब्लिकली हाईलाइट शेयर है. मैंने उसकी सारी हाईलाइट्स पढ़ ली ब्रेथ की. एंड आई गॉट इनटू दिस बुक. और फिर मैंने लास्ट से उल्टा पढ़ना चालू किया. इस बुक में जो ब्रीदिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को मजा ही आ गया कि जैसे ब्रीदिंग के ना 3-4 फंडामेंटल्स होते हैं. कि एक तो ब्रीथ स्लोली, और ना एक होता है ना कि आराम से लाइक कि यार स्लोली ब्रीथ करो. पीपल डोंट टॉक इनफ अबाउट हाउ यू शुड होल्ड योर ब्रेथ. तो इसमें बताया कि द राइट वे टू ब्रीथ इज, एक तो आपका इनहेल जब करते हो 5.5 सेकंड्स का होना चाहिए, और एक्सहेलेशन भी 5.5 सेकंड्स की होनी चाहिए. दिक्कत अभी दुनिया के साथ है, हम बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं. हाँ. तो ये है कि आधा घंटा निकाल के खुद को, क्योंकि हमारी इतनी गंदी हैबिट है कि रोज को वो ट्रेन करो कि जिसमें आप बहुत ही स्लोली ब्रीथ कर रहे हो, आपकी आधी लाइक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम, कि मुंह से तो सांस लेनी ही नहीं चाहिए. ये तो हाथ मतलब से लो. बिल्कुल कंप्लीटली नो नो है. और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेने के फायदे कंपेयर टू राइट नोस्ट्रिल, उसके भी बहुत अलग अलग टू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो इंटेंस. न्यूरल अलग अलग पाथवेज से कनेक्टेड है, और राइट वाला अलग से है. तो एक से कॉर्टिसोल लेवल नाइस. बढ़ता है, एक से नहीं बढ़ता है. क्रेजी ओह. स्टफ टू.
मैं डाल देता हूँ ऐसे विश लिस्ट में। हाँ अपने किंडल पे मैंने डाल दिया है। आई लव द किंडल यार, आई एब्सोल्युटली लव द किंडल, इट्स सो कन्वीनियंट इफ यू आर अ रीडर और वांट टू बी अ रीडर। किंडल इज द बेस्ट डिवाइस। अब तो बेस वाले में भी लाइट आने लगी है अंदर, तो आप रात में बैठ के भी उसको पढ़ सकते हो। आई लव द किंडल, वट एवर बुक्स आई एंजॉय रीडिंग ऑन किंडल आई ऑर्डर अ फिजिकल कॉपी उसके बाद, ताकि ऐसे घर में लाइब्रेरी में भी ऐसे लगी रहे वो किताब। तुम्हारे लिविंग रूम में रखी है एक बुक शेल्फ, मेरे को एक बुक शेल्फ खरीदनी है, मेरे पास सारी किताबें हो गई हैं जो मेरे को भी लगानी है बुक शेल्फ में, पर बुक शेल्फ नहीं है उसके, तो वो खरीदना है मेरे को, वो है मेरी लाइफ में नेक्स्ट गोल बड़ा। टॉकिंग अबाउट लाइक ऐसे थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू बाय, एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 10,000 रुपीज जो आप सबको Kindle, रेकमेंड करोगे? Kindle, Kindle. without a doubt. What else do I use every day? I mean, a fitness band is something I would recommend everyone to buy. Now, this is the Apple Watch, which is thoda like not within your 10,000 wala thing, but there are a lot of fitness bands that, for the longest time, I've bought every single edition of the Mi Band, right from Mi Band 1, 2, 3, 4, 5. Fifth के बाद फिर मैंने iPhone ले लिया तो मैंने ये घड़ी भी ले ली. But it's great to keep you just active enough. तुम्हें दिखता रहेगा कि तुम्हारे 10,000 स्टेप का तुमने टारगेट बनाया है, तो तुम चलने का मोटिवेशन आता रहेगा. These are very little things that can impact your life a lot. और क्या है? Then I use मेरे ये वाले जो headphones हैं almost every day. These are the Sony WH-1000 हाँ XM4. ये वही वाले हैं कि जिनकी बहुत खतरनाक नॉइस कैंसलेशन है। हाँ क्योंकि वही मेरे वाले पास हैं, बोस Q3 वो है, तो जिनका उनके उतने क्वाइट नहीं है, कंफर्ट, इनके हाँ तो बेटर है, इनके बड़े इनके बेटर है, कंपैरिजन है और सोनी के बेटर है शायद। इनके बेटर है. The reason I bought these was because I just wanted good quality headphones. I've हाँ had these for a year and a half at this point. अभी XM5 आए हैं, जब वो इंडिया में आएंगे तो मैं वो भी लूंगा. I'll hand these down to my sister or something. But ये बहुत काम आता है यार. मेरे घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं दिन में फोकस कैसे करूंगा अगर मेरे सर पे हेडफोन नहीं होंगे तो. But not just for that, I like listening to music in the best quality that I can. तो ये है, but these are 25,000. जब मैंने खरीदे थे, अब थोड़े सस्ते हो गए होंगे, तो मैं थोड़ा बजट के ऊपर जा रहा हूँ, बट हाँ हाँ। वो है. और अंडर ये जो चीज़ है ना, मैं तो बहुत बार इनको बस ऑन कर देता हूँ विदाउट प्लेइंग एनीथिंग जस्ट टू कैंसिल द नॉइस। वो बहुत सही हाँ. एक हैक है कि बस आप सिर्फ नॉइस कैंसलेशन के लिए यूज कर रहे हो, देयर इज नॉट अ नेसेसिटी टू प्ले थिंग्स ऑल द टाइम। I think if you can afford whatever you can afford, tech that makes life more convenient for you, you should buy that tech. हम्म Is my philosophy. Like I've बीच में मेरे को like once you start editing, then आपको हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़ती है कि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे एडिट करो. I've got इधर यहाँ पे 2-3 हार्ड ड्राइव तो ये पड़ी हुई हैं, लाइक प्रॉपर मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स. 3-4 वो पीछे अलमारी में पड़ी हुई होंगी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई पुट ऑफ बाइंग एन SSD बिकॉज वो महंगी आती है. 15-16 हज़ार की SSD आती है, 3,000 में एक टीवी के हार्ड ड्राइव आ जाएगी. सो आई पुट इट ऑफ फॉर अ गुड ईयर. बहुत ही मजबूरी से मैं ऐसे एडिट कर रहा था, रेंडर होने में टाइम लगता था. उसके बाद वंस आई बॉट माई फर्स्ट SSD, ये वाला कहाँ गया, ये सोनी का T5, माई लाइफ हैज चेंज्ड. मेरा एडिटिंग टाइम 5x कम हो गया है. तो ये मेरा फिलोसफी है लाइफ में थोड़ा, कि टेक दैट इम्प्रूव्स योर लाइफ शुड, लेट्स सेव्स योर टाइम, इम्प्रूव्स योर लाइफ, उसमें तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए. दैट कैन बी 1,000 रुपए का फिटनेस बैंड, दैट कैन बी 100 रुपए का ऐसे वाईफाई चलने वाला बल्ब, ऑल्सो इट कैन बी एनीथिंग. बट इफ इट इज इम्प्रूविंग योर लाइफ, देन आई थिंक यू शुड invest in it. But डू यू again, वांट this टू is, रिकमेंड सम वीडियो गेम्स? yeah, I mean, I'm not like, I love playing story games, so there हम्म are a lot of games that I've spent a lot of hours in. But ऐसे recommendation में क्या, like I love the Mafia का story. हम्म I loved Red Dead Redemption. I keep coming back to it a lot of times. It's just fun roaming around that world on a horse. तो वो fun है. Recently I'm playing Watch Dogs Legion. तो वो काफी interesting game है. What other games have I spent a lot of time in? I've spent a lot of time in the Batman Arkham games. हम्म What other games have I spent a lot of time in? I've recently replayed the Max Payne 2, Max Payne 3 मैंने replay करा है recently. जो बचपन तो वो में काफी खेलते थे अच्छा हम game. लोग, वो वाला, बचपन में खेलते थे, वो yes. जिसमें एक सुंदर सी लड़की थी। मैक्स पेन 2। तो वो गेम है अभी इसी कंप्यूटर पे है. सो once I got a Windows computer done, I bought a Steam account, मतलब made a Steam account, bought a couple of हाँ games, तो वो खेले हैं मैंने. कल ही शाम को या परसों शाम को मैंने Battlefield डाउनलोड किया है, तो Battlefield खेल रहा हूँ अब मैं. आप कह So रहे हैं आपको स्टोरी वाले गेम पसंद है? I like story based games because I can then be more immersed in them ना. हाँ देन स्टीम पे एक गेम है कॉल्ड फायर वॉच। सो Firewatch. हाँ, तो उसमें बेसिकली एक बंदर को एक बहुत ही बोरिंग जॉब मिलती है कि उसको फॉरेस्ट में भेज देते हैं
जब भी कोई फायर लगती है तो आपको उसकी रिपोर्ट देनी है एंड यू Okay. बेसिकली लाइक उसके पीओवी में आप खेलते हो. ही जस्ट कीप्स टॉकिंग टू अ गर्ल फ्रॉम अनदर टावर जो अपने एरिया की फायर वॉचिंग कर Reports रही है. equal. हाँ, है Okay. ना. और ये दोनों बात करते हैं एंड दे आर सुपर बोर्ड, सुपर लोनली, एंड हाउ द Hmm. स्टोरी प्रोग्रेसेस. इट्स अ ब्यूटीफुल Nice. गेम. That's a good premise. Good premise. हाँ. So I enjoy game वैसे ही games जिसमें I can then become immersed in the story. तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को rather than playing ऑनलाइन या फिर मल्टीप्लेयर गेम्स. लाइक ऑफ कोर्स इफ देयर आर फ्रेंड्स ओवर एंड हमको ऐसे पोर्टल कॉम्बैट टाइप का कुछ खेलना है या फीफा खेलना है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But personally, I like playing games where I'm part of the story. Like I can feel I'm part of the story. And music, like what kind of music are you into? My music is also very, I say, haphazard. There's nothing in particular that I like. Like these days, I'm into Delhi ka rap music scene. So I think my music, one thing that Spotify does really well, and I'm grateful for Spotify for this, is it gives you an end of year list of your favorite tracks. So I can see my music taste changing year to year. Like in 2017, it was a lot of EDM. 2016, 2017, a lot of EDM. 2017, 2018, it turned into a lot of Sufi and Ghazal, vagera, vagera. Then 2018, 19 changed into very hardcore English rap music. Then 2020, 21, it was a lot of Punjabi music, like Punjabi rap, Punjabi music, वैसा. अभी it's a mix of a few things. I've discovered a bunch of new artists that I'm listening to a lot. तो अभी वही है. I think I don't know if my Spotify playlists are public, but अगर है वो end of year वाले playlist तो उसमें काफ़ी ऐसे रेयर से तुम्हें अलग अलग गाने मिल जाएंगे काफ़ी डिफरेंट टाइप के. दिल्ली रैप सीन में कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं? Yeah, I had a couple of them on the podcast a couple of weeks ago. Karan, Udbhav, I went to a show abhi recently. I went to a jazz show. So there's a band called Submarine in Space where I have a school friend of mine who plays guitar and sings there. तो वो है. But other than that, हाँ, आई थिंक ये दो लड़के हैं, करुण उद्भव, जिनके गाने मैंने काफ़ी सुने हैं. इनके थ्रू आई हैव डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल. सो समवन वांट्स टू गेट इनटू दैट सीन, तो दैट इज अ गुड प्लेस फॉर यू गाइस टू स्टार्ट. नाइस ब्रो, लाइक मेरे को बहुत सारी अच्छी रिकमेंडेशन मिली. उसके अलावा भी वी डिस्कस्ड एंड लाइक डिड कन्वर्स अबाउट सो मेनी गुड थिंग्स. इज देयर एनीथिंग जो मैंने नहीं पूछा है दैट यू वांट टू टॉक अबाउट कि यार ये बात नहीं की, इसके बारे में बात कर लेते हैं, या एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? Nothing that comes to the top of my head because I asked you the questions before we started recording. So that हाँ. is, मतलब sorry the people who are watching ने बहुत ऐसे YouTube के बारे में काफी off the record बात कर ली थी, तो उसमें मजा तो आया था मेरे को. It's good fun यार. Yeah. I had fun talking to you. I was very excited for this. नाइस. एंड पार्ट 2 भी कर लेंगे यार, अगर आपको कभी भी लगे. हम बिल्कुल. I स्ट्रीम्स think करते we'll probably do a live stream sometime. That would be fun. ओ लेट्स डू तो इट. लाइव स्ट्रीम करना मेरे को मजा आता है because interaction करने के लिए chat भी होती है ना. तो Yeah. In fact, we also come up with good ideas then. In fact, so we started a new books channel called Kitabi Cabins, and like Vani वहाँ पे books सिर्फ related किताबों की बात exclusive करती है. content कर रही है. So maybe you can come there and like do Yeah, maybe 100%. Let me know. We'll have a chat वहाँ पे आराम से. I did अभी last week a live stream with this guy called B Stats. We were supposed to do this live stream 2 years ago about superhero movies, and I had a lot of fun doing that on live, and people were interacting. That was a lot of fun. तो ऐसे लाइव स्ट्रीम मेरे को और करना है, थोड़ा सा हम मजा आता बहुत है. करते हैं लाइव स्ट्रीम्स. लेट्स डू दैट. हमने भी लाइक आई यूज्ड टू डू दीस जब हम रॉन रील करा करते थे, पर उसके बाद फिर वो आदत छूट गई. आई वांट टू गेट बैक इनटू दैट हैबिट. Yeah, Essentially that is coming back. We hopefully burnout wala phase ke towards end, but we'll see, time will tell. And definitely should subscribe to Chalchitra. These guys are doing a really good job. अभी ये off the record मैंने बोला था तुम लोगों को कि yours is one of the few podcasts in the country that I enjoy listening to or that I consume dedicatedly, not ऐसे कि ठीक है हाँ 2 मिनट देख के छोड़ दिया. And that's just because of the way you communicate and the topics that you talk about, and you're not intentionally trying to be पैसा कैसे कमाए type का podcast, which is rare to see in this space. I think that just for that they deserve your ऐसे वो subscribe button दबाने वाला. So please go ahead and do that.